So good morning to all. You all are welcomed in this first session uh, where we will discuss in this faculty development program which is based on the basics of Scilab about matrix generation, matrix operations and matrix shaping. So we all know that Scilab is an open source software and it is very much similar and compatible to MATLAB. So the first thing that we'll study is how to generate different kinds of matrices, how what are the different operations that can be done over these matrices, and how we can shape the different generated matrices. So for this we'll open our software. So we have opened our software. So in the first video or the session I showed you how to install this software. So first of all सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं. तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे pwd and the current directory is within C. We have users folder, then we have Alkesh Agarwal and documents. तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी में, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रोसेस डिफाइन करेंगे, हम एक डायरी जनरेट करेंगे. तो वो एक टेक्स्ट फाइल जो जनरेट होगी वो इसी पाथ के अंदर फोल्डर में जनरेट होगी. उसके लिए हम लोग लिखते हैं diary डायरी एंड देन वी विदिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप एक नाम दे देंगे, session1.txt जरूर लगाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. सो डायरी diary डायरी within small brackets and within single inverted comma we write the name. Suppose I wrote session1.txt और enter कर देंगे. तो आप देख रहे हैं कि the value will be 1 which shows that a text file is being generated. तो अब यहाँ हम जो भी instructions execute करेंगे वो हमारी text file में generate होते रहेंगे. तो first we'll see how to generate different kinds of matrices. So first we'll generate a numeric matrix. So we'll write a is equal to, ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वील राइट 1 2 3 देन सेमी कॉलन. तो हर एक नंबर के बाद हम एक स्पेस देंगे. अगर स्पेस नहीं देंगे तो एक सिंगल नंबर वो ले लेगा. स्पेस देने का मतलब वी आर डिफाइनिंग डिफरेंट नंबर्स. और सेमी कॉलन से पहले फर्स्ट रो हमने डिफाइन किया, देन आफ्टर सेमी कॉलन वी हैव 4 5 6 हमने सेकेंड रो डिफाइन की, देन 7 8 9 और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे. एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमने एक बहुत आसानी से एक न्यूमेरिक मैट्रिक्स जनरेट कर ली. सो दिस इज आवर फर्स्ट मैट्रिक्स, न्यूमेरिक मैट्रिक्स. ओके, देन we'll generate another matrix which is Boolean matrix. So we'll write b, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. Boolean मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए हमें थोड़ा अलग नोटेशन होता है, क्योंकि Boolean में 0 और 1 होता है. 0 रिप्रेजेंट्स लो वैल्यू, 1 रिप्रेजेंट्स हाई वैल्यू, और 0 इज फॉल्स वैल्यू एंड 1 इज ट्रू वैल्यू. तो हम यहाँ पर लेते हैं परसेंटेज t एंड परसेंटेज f. So we'll write percentage t, then space percentage f, then semicolon, then percentage f, space percentage t, percentage f, semicolon, then percentage f, percentage f, then small square bracket को close कर देंगे and we enter. So this is how we generated a Boolean matrix. So this is the second matrix that we generated. Then I'll show you how to generate a
पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, s इज इक्वल टू परसेंटेज s, एंटर करेंगे. So if we define s is equal to percentage s, then we'll define another matrix. तो यहाँ पर जो भी notation होगा वो s में ही होगा. तो again we'll open the square bracket, then we write first row s s s semicolon, then s power 2. तो power लिखने के लिए हम लिखते हैं s cap 2, then s cap 2, s cap 2. This is the second row. Then we can write s cap 3 space s cap 3, that should be cap space s cap 3. Square bracket को हम close कर देंगे, and we'll see very easily we generated a polynomial matrix. So first we generated a numeric matrix, then Boolean matrix, then we generated a polynomial matrix. Now I'll show you how to generate a rational matrix, that in terms of p by q. So आई होप आप ये चीज़ें खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने लैपटॉप पे. सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू नो practice step by step as I am showing you. So CLC लिखने से स्क्रीन क्लियर हो जाती है. Then we'll generate another matrix. Again S is equal to percent S. ये जरूर आप लिखेंगे. Then we define another matrix D, which is equal to 1 by S, 1 by S, 1 by S. Now this is in form of p by q. Then we'll write S upon S plus 2, S upon S plus 2. आप अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप एक ही वैल्यू बार बार रिपीट करें बस. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग द सेम वैल्यूज. हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, एंड यू सी rational matrix has been generated. Okay, so you can see how powerful is this software. So we are very conveniently generating different types of matrices. So again we'll do CLC. Now I'll show you how to generate a string matrix. So I'll take another variable e, open the square bracket. और यहाँ पर थोड़ा ही ध्यान रखना कि जब हम स्ट्रिंग मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास होगा. तो आई राइट Scilab is a. So this is first row, then separated by semicolon. Then I'll write scientific language, then semicolon, again open, compatible to MATLAB, and square bracket close. If I enter, you see we have generated a string matrix which has first row as Scilab is a, second row as scientific language, and third row is compatible to MATLAB. So see how conveniently we generate different types of matrices. Then another matrix is a random matrix. So I write f is equal to, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होता है RAND, और इसके आगे हम रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करते हैं. तो ये जो हमने लिखा है 2 इज नंबर ऑफ रोज, और जो 3 लिखा है इज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड इंस्ट्रक्शन इज RAND.
इसको हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं we generated a matrix which has random numbers and these are between 0 and 1. The speciality of this matrix is जब आप दोबारा इसको जनरेट करेंगे तो हर बार नई वैल्यूज आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं फिर हमने इसको किया तो अगेन we are getting the different values. So this is important. Then we have another matrix which is called I matrix. So we write G is equal to E by E, which is also known as diagonal matrix. तो यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है 3,3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप सेम देंगे और लिखेंगे E by E, और हम जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे we generated a matrix with diagonal values 1 1 1. So this is called a I matrix or diagonal matrix. Now I'll show you how to generate a null matrix. So we defined a variable h, then we write zeros, zeros. Again you have to define number of rows and number of columns. So I write 4 comma 4, give a enter, and you see a matrix with order 4 plus 4, that is 4 rows and 4 columns is being generated with, which is known as a null matrix. Then I'll show you how to generate a matrix with all the values ones. For this we have instruction which is called ONES ones, small bracket. I write 3 comma 3, that is 3 rows and 3 columns. I give enter and see a matrix is being generated with all the values 1 1 and 1. So this is called a matrix or ones matrix with all the values as 1. So now we can define a row matrix with where we can initialize the first value, the last value, and the numbers in between. So I write J is equal to LIN and SPACE line space. So we write line LIN line space. Then suppose I want to generate 20 numbers between 1 and 10. So I write 1, then 10 and 20, which means the first value will be 1, the last value will be 10, and in between 1 and 10 we want to generate 20 numbers. So you see, so first value is 1, the last value is 10, and in between we have 20 numbers which are being generated, and these are linearly spaced. The spacing will be linear. So you can see, suppose I want to generate 5 numbers in between. So you see 5 numbers are being generated between these two. Now there is another similar instruction which is called log space. So here we write LOG SPACE space, and here if you see the same example 1 comma 10 comma 5, so you see the difference. Now what the difference you are seeing is, or let me say take another example, suppose I take 2. So what you can see is the first value is 10, the last value is 100, and then we have overall 5 numbers starting from 10 to 100. So here when we write log space, so 1 means 10 power 1 is 10, 2 means 10 power 2 is 100, and we have the numbers in between. So you see the difference between the two. So I write CLC
So I'll just again show you. So we have line space where we have linearly spaced values between the first and last value that you define, and we have log space where the values are, the first is 10 power 1, the second is 10 power 2 is 100, and so now I'll show you. I define another matrix x which is equal to 1 1 comma 1 and minus 1, enter. And suppose in many cases you want to repeat this matrix, you do not want to write this matrix again and again, so we have very useful instruction. So I write y is equal to repeat matrix, and you write the matrix which you have already generated and the how many times you want to repeat. So suppose I want to write 3. So if you give an enter, so you see, oh, it's not show you. A is this, and then I have to write, no, this is not A, I have to write X over here. Okay, एक हमारी दूसरी मैट्रिक्स थी, यहाँ पे हमने X एक मैट्रिक्स जनरेट की थी. I'll show you again. So we have this X matrix and I want to repeat it. So you see this one. So 1 1 1 minus 1 is being repeated 3 times, both row wise and column wise. So in all we have a dimension of 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6. So the new matrix has a dimension of 6 cross 6. So this has a dimension of 2 cross 2 and multiplied by 3 it has a dimension of 6 cross 6. Okay, so we have this matrix y. Now you can calculate the dimension of this matrix. So for this you have to write within square bracket r comma, दो वेरिएबल आपको डिफाइन करने होंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे SIZE, साइज ऑफ दैट मैट्रिक्स जिसकी आपको साइज कैलकुलेट करना. तो आप देखेंगे वी हैव 6 rows and 6 columns. So this is very useful property. CLC. Another thing that I want to show you is suppose I write I is equal to 1 to 5. तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट होगी 1 से 5, इसमें स्पेसिंग 1 1 1 की है. Okay, so if I write again z is equal to matrix 1 is to 5, so you see we have a matrix जहाँ पे हमने सारी वैल्यूज डिफाइन नहीं की पर हमने एक रेंज डिफाइन कर दी, तो वो अपने आप जनरेट कर लेगा 1 2 3 4 5. So with this I want to show you another kind of matrix which is called complex matrix. So I write as COMPLEX complex, or within small bracket again I write 1 comma 2. तो यहाँ पे क्या है, जो पहली वैल्यू है वो रियल वैल्यू है, दूसरी इमेजिनरी है. तो आप देखेंगे वी जनरेटेड 1 प्लस 2i, एक वैल्यू हमने जनरेट कर दी. लेकिन अगर हमें एक पूरी मैट्रिक्स जनरेट करनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू COMPLEX कॉम्प्लेक्स विद इन स्मॉल ब्रैकेट देन 1 is to 5, ये हमने रियल वैल्यूज की रेंज डिफाइन करी, कॉमा देन स्क्वायर ब्रैकेट 1 is to 5 और हमने एंटर कर दी. तो आप देखेंगे एक मैट्रिक्स जनरेट हो गई.
with first value 1 plus I, 2 plus 2I, 3 plus 3I, 4 plus 4I, 5 plus 5I. So let me again recap what we discussed here. So first I generated this numeric matrix. ये जो मैं आप ऊपर नीचे आप टैब बार से कर सकते हैं. First we generated, then we generate numeric matrix, then we generated a Boolean matrix, then we generated polynomial matrix, then we generated a rational matrix. I'll show you. So recap. Then I generated a string matrix. Then we have a random matrix, RAND 2 3. Then I showed you a zero matrix. Zero matrix, then ones matrix, ones matrix, then we have a line space, then we have a log space matrix, then we have a repeat matrix, so I hope you must have understand all these processes of generation of different matrices, and I hope you will all practice and learn something out of it. So see you soon in the next session.